Let's start our session now. So I welcome you for online and contemporary economic issues. So for the next 3 days, I will be putting out lectures on certain topics of the economic survey, which I feel are we will not cover the entire course, but we will be covering the most important parts of it, which will help you in your revision. And all the links and all the PDFs will be provided to you on the university coordination group that we have. So जिसमें बहुत सारे अब लोग आना शुरू हो गए हैं. Your senior batch, I think there are around 150 students all from all 40 colleges जिसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें इको ऑनर्स है सारे हैं. In your case, I think with time we will have more in colleges. I think some of the colleges are now well represented, like LSR and DRC, probably JMC. So we will try to expand that coverage as well in due time. Now, so coming to your external sector, which is an important reading. So I've already marked the readings for you. Now, one of the questions that I often get with respect to my markings is that what is the color coding that is there. So the color coding is that the pink portions are extremely important. So the way that I put out is pink is the most important aspect of the course, and then you have blue, and then you have green, and then you have yellow. So this is how the color coding of all the PDFs have been done. If there is a color in between, then that means that color is in between these two colors. So now coming to the important aspect of the BoP numerical first, because that is something a lot of students often have confusion on, that how is this BoP working. Now if you see the past year papers, you usually have two questions from section A, and then you have section B. So section A has two questions, and usually both of them are compulsory questions. In past, what we have seen is that the first two questions are either numericals, one of them being from the budgetary system, and the other one from BoP, or you have one short note and a set of short notes and then one numerical. So in any case, I would suggest you to do the numerical parts carefully, because these are very low hanging fruits, in the sense that you can really score high marks in your examination just because of the numericals, and they are very easy to score. So you should not be callous with respect to your numericals. Now coming to the BoP numerical, now this is something that you would have also done in class 12. So class 12 में हम BoP पढ़ते हैं, और BoP के अंदर usually दो accounts होते हैं. So BoP is nothing but your relationship with the rest of the world, your accounting relationship with the rest of the world. So in general, अगर आप BoP को देखो तो दो major accounts होते हैं. One is called as current account, the other is called as capital account. Current account में usually trade से related items आती हैं, and usually short run की items आती हैं. But capital account के अंदर investments and loans से related items आती हैं. जरूरी नहीं है कि capital account में long term items हो and सारी short term items current account में. But having said that, the division is that whatever is on a rolling basis, trade हो गया, invisibles हो गया, all of that comes under transactional जो चीजें होती हैं वो सारी current account में आती हैं, और investment और loan से related जो चीजें होती हैं वो आपकी capital account में आती हैं. Now let us understand the current account also in detail. So this current account is further divided into two parts. One is called as your visibles, and the other is called as invisibles. Visibles is also called as balance of trade. बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं इसको, मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं. जो गुड्स दिख सकते हैं, आप देख सकते हो, उनको फील कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मर्चेंडाइज ट्रेड. सो दैट इज वन एस्पेक्ट, एंड द अदर एस्पेक्ट इज इनविजिबल्स, जिसके अंदर तीन आइटम्स आती हैं: सर्विसेज, ट्रांसफर्स एंड इनकम. सर्विसेज कौन सी? सर्विसेज हमने जो बेची, एंड सर्विसेज जो हम खरीद रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया सेल्स अ लॉट ऑफ BPO सर्विसेज, IT इनेबल्ड सर्विसेज, ये बहुत सारा हम बेचते हैं, और खरीदते भी कुछ तरीके की सर्विसेज हैं. तो उसका जो नेट अमाउंट है वो यहाँ पर आता है. सिमिलरली नेट ट्रांसफर्स, जो हमने बाहर लोगों को ट्रांसफर किया, या बाहर से इंडियंस ने अपने रिलेटिव्स को यहाँ ट्रांसफर किया,
और इंडियंस ने जो बाहर ट्रांसफर किया. सो नेट अमाउंट यहाँ पर आ जाता है. और सिमिलरली देयर वाज समथिंग इन योर क्लास 12 दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट कम्स हियर. सो these three are your invisibles, and your trade balance. Your balance of trade is made out of two items, merchandise exports and merchandise imports, which basically means visible exports and visible imports, जो देख सकते हैं. So if you subtract exports minus imports, then you get exports minus imports, then you get merchandise trade balance. That is the first element that you should know. Now merchandise trade balance in case of India is usually negative. हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं एंड एक्सपोर्ट इतना नहीं करते हैं. सो इसलिए हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस यूजुअली नेगेटिव रहता है. हाउएवर हमारा इनविजिबल्स का जो बैलेंस है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूजुअली आपको हर क्वार्टर देखो, you will find out this to be a negative figure in billions of dollars. Whereas if you see invisibles के केस में आपको usually ये आइटम जो है हमेशा पॉजिटिव दिखाई देती है because of two major factors. एक, हमारे सर्विसेज हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं. India is one of the largest suppliers of services in the world. And then apart from that, in fact, world service exports, I was teaching this particular reading to your seniors, and you will probably do it in your sixth semester, that world के total services exports में हमारा जो शेयर है वो around 3.54% है. So which shows that हम बहुत बड़ा एक major service exporter है. And transfers के अंदर India is the largest recipient of transfers in the world, mainly because of the transfers that we get from Gulf countries. तो हमारे बहुत सारे citizens जो हैं वो Gulf में जाके काम करते हैं and वहाँ से labor income कमाते हैं और फिर वो अपने घर पे transfer करते हैं. So a lot of that is coming from that, but other countries are also there. But Indian expatriates जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनकम जो है वो ट्रांसफर करते हैं वापस बैक होम. सो आपको ये दो फिगर्स हमेशा पॉजिटिव मिलेंगी, जिसकी वजह से योर इनविजिबल अकाउंट्स इज यूजुअली वेरी इज इन द पॉजिटिव टेरिटरी. But overall, when you have to compare, when you have to combine these two accounts, what you get is current account balance. So balance of trade plus balance of invisibles. I'm just coming up with this balance of invisibles. There's nothing called as balance of invisibles. I'm just adding all these three things up. So if you add these three things up, you get something called as say invisibles का balance बोल सकते हैं. Then if you add these two, you get current account balance. अब current account balance इंडिया के केस में आपको बहुत टाइम नेगेटिव दिखाई देगा. Why will that be negative? Because India का merchandise trade balance kind of overpowers its invisibles का overall balance. So you usually have a negative balance on your current account, which in technical words we call in economics as current account deficit. कि current account जो है वो deficit के अंदर. So I can call this particular Q2 of 2021-22 as either minus 9.6 billion का हमारे पास माइनस करंट अकाउंट बैलेंस है, या फिर आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 9.6 बिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट. सो क्योंकि डेफिसिट है इसलिए नेगेटिव आप पहले ही हटा सकते हो, और अगर ये पॉजिटिव टेरिटरी में है तो आप उसको सरप्लस बोलोगे. सो दिस वाज लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ कोविड वी सॉ अ कपल ऑफ क्वार्टर्स जिसके अंदर हमारा करंट अकाउंट जो था वो पॉजिटिव चल रहा था. सो this was an aberration because of कोविड की. और कोविड की वजह से क्यों हुआ था ये? क्योंकि कोविड की वजह से हमारा पेट्रोल का जो इनटेक था वो बहुत कम हो गया था, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम हो गए थे, और पेट्रोल का प्राइस, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो क्रैश डाउन कर गया था. सो इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स दैट हमारा जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट था वो काफी ज्यादा गिर गया. सो इफ यू सी हेयर आपका 111 बिलियन डॉलर से एकदम से 63 बिलियन डॉलर गिर गया, जिसकी वजह से योर करंट अकाउंट वाज इन सरप्लस. सो अगेन समथिंग that is often asked in a typical UPSC style question कि इंडिया का पिछले कुछ सालों में this is the first time that we are seeing a current account in positive territory, but this is in history of India this is not the first time, but in general in the last few years yes this is the first time that we are seeing. इससे पहले कुछ साल पहले हमने late 2000s के अंदर हमने देखा था कि तभी 2 क्वार्टर्स के लिए ये करंट अकाउंट जो है सरप्लस में चला गया था. सो दिस इज वन थिंग. करंट अकाउंट
is this. Now the other account is capital account. Now if you see capital account में, as I told you, two major Excuse me, sir. Yes. Again, tell the equation of current account deficit. Current account deficit is, और current account का balance, not current account deficit. Current account deficit का मतलब हुआ कि वो negative में है. Current account is nothing but your exports minus imports, which is your balance of trade, plus your invisibles. और invisibles में क्या क्या आता है? Invisibles में आता है, और net invisibles की बात कर रहा हूं मैं, services, income and transfer. If you add these items, you will get current account balance. If this current account balance is in negative territory, you call it as current account deficit. If it's in positive territory, you call it as current account surplus. And it's majorly in the negative territory because imports are always because of merchandise imports are always more, not imports, merchandise imports जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं इंडिया के. ये आइटम हमेशा ज्यादा नेगेटिव ही आता है ज्यादा, इसीलिए आपको ये हमेशा नेगेटिव दिखाई देगा. नेगेटिव ही आता है मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस, ये आपका हमेशा नेगेटिव चल रहा होता है. वी आर मेजरली एन इंपोर्टिंग कंट्री. सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो. तो हम करंट अकाउंट बैलेंस पे पहुंच गए. तो हमने एक अकाउंट देख लिया. नाउ द अदर अकाउंट दैट वी हैव इज कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट. Now capital account, as I told you, has two major items, but apart from that there are other items as well. दो major items क्या आती हैं इसके अंदर? Foreign investment and loans. उसके अलावा you have another item, ये rupee debt service इतना important है, as you can see ये पूरा zero ही चल रहा है, तो you can probably cross it out. But उसके अलावा banking capital भी होती है. I'll explain you what banking capital is also. So investments जो होती हैं इंडिया के अंदर, suppose कोई बाहर से firm आ रही है, जैसे से हार्ली डेविडसन इंडिया के अंदर आया, तो हार्ली डेविडसन इंडिया के अंदर आ रहा है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है. या से यू टेक अप अनदर कोई ब्रांड, फॉरेन का ब्रांड ले लो, नाइकी जैसे इंडिया के अंदर आया तो वो इंडिया में आके एफडीआई लेके आ रहा है. अमेजॉन आया तो अमेजॉन एफडीआई लेके आया. सो दीज आर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. देन यू कैन ऑल्सो हैव फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन द सेंस दैट किसी ने इंडिया की डायरेक्ट प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करनी, बट इंडिया के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट्स के अंदर. ठीक है. सो दैट इज अनदर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कि इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एट टाइम्स हॉट मनी भी बोलते हैं इसको. हॉट मनी इसलिए होता है क्योंकि ये इधर से उधर भागता रहता है कई बार, जस्ट टू चेज रिटर्न्स. ठीक है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट अभी अच्छा है तो आ जाएगा खूब सारा पैसा, अगर अच्छा नहीं चल रहा होगा तो एकदम से चला जाएगा. Whereas FDI is much more stable. It usually comes for longer. कोई ऐसा नहीं आएगा कि इंडिया में एक साल के लिए पैसा लगाया अपने बिजनेस में और फिर उसके बाद उठा के ले गया. So you usually have this money being involved for long run, and वो create GDP को भी ज़्यादा sustainably create करता है और employment भी ज़्यादा करता है. So this is one kind of investment that is there. So if you add these two items, you get foreign investment. Then apart from that, your country also takes up loans from external sources. अब external sources कैसे हो सकते हैं? External assistance हो सकता है कि आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ने बाहर से वर्ल्ड बैंक से बोरो किया, या IMF से बोरो किया, या किसी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से बोरो किया, या फिर किसी कंट्री से बोरो किया. So those are called as external assistance being taken. Then apart from that you have commercial borrowings. अभी commercial borrowings क्या होता है? इनको कई बार हम external commercial borrowings भी बोलते हैं. Now what are these external commercial borrowings? These external commercial borrowings are when a company in India wants to raise money, and instead of raising that money from domestic banks, it steps up its game and says that I want to raise this money from say a bank in London or say a bank in US. सो अगर इस तरीके से अगर आप बाहर के किसी बैंक से या बाहर के किसी इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज कर रहे हो फॉर एंड ऑन कमर्शियल बेसिस का मतलब ये होता है कि आपको जिसने आपको लोन दिया है उसने आपको प्रॉफिट के लिए लोन दिया है. एक होता है कोऑपरेटिव बेसिस के ऊपर लोन देना, और एक होता है कमर्शियल बेसिस. फॉर एग्जांपल यू हैव कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, यू हैव कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया. तो कोऑपरेटिव का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसका पर्पस होता है कि पूरी कम्युनिटी को हेल्प करना. वेराज कोई भी चीज कमर्शियल पर्पस से की जा रही है तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए की जा रही है. सो देयरफॉर दिस एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक्स से जो बोरोइंग आप कर रहे हो या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो कर रहे हो वो बाहर के बैंक से कमर्शियल बोरोइंग, कमर्शियल रेट के ऊपर आप बोरो कर रहे हो. दैट बेसिकली कम्स हियर.
एंड देन शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू इंडिया फॉर ट्रेड पर्पसेस, कई बार हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, कई बार बिल्स ऑफ क्रेडिट होता है, तो ऑल ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यूजुअली ट्रेड आइटम्स के लिए होता है. So this is not a huge amount, but at the same point of time you should know that this is also something that we include under loans. So if you add these three items, these three items will give you the overall loans taken by the country in from the rest of the world. Apart from that, again ये loans अगर आप ले रहे हो तो that means आपकी country के अंदर dollars आ रहे हैं, ठीक है. सिमिलरली अगर आपकी कंट्री में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये डॉलर्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर. देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव बैंकिंग कैपिटल. बैंकिंग कैपिटल इज व्हेन से एनआरआईज जो हैं वो इंडिया में आके अपना अकाउंट खोलते हैं एंड उसके अंदर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं क्योंकि उनको काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज FCNR अकाउंट्स, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स होते हैं यूजुअली बैंक्स के अंदर, इन पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. तो इसीलिए कई बार बाहर के बैंक्स जो हैं क्या कहते हैं, बाहर के जो एनआरआईज हैं वो इंडिया में अपने इन अकाउंट्स में पैसा डालते हैं और वो अकाउंट जो है वो डॉलर्स में मेंटेन होते हैं. सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बैंकिंग कैपिटल. सो इफ यू ऐड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड बैंकिंग कैपिटल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो ऐड अदर कैपिटल, कुछ और कोई इनके अलावा कोई भी चीज अगर कैपिटल के फॉर्म में इंडिया में आ रही है तो you include it under other capital. If you add these four items, you get your capital account का balance. Now in case of India, capital account जो होता है वो usually positive ही रहता है क्योंकि हमारे यहाँ हमारी कंट्री के अंदर हमें बहुत सारा FDI और FII हमारे कंट्री के अंदर आता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें कमर्शियल हमारा जो कमर्शियल बोरोइंग है और जो हमारा ये बैंकिंग कैपिटल है ये भी यूजुअली पॉजिटिव रहता है. So it's because of these items कि हमारा if you see आपको usually दिखाई देगा आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो पॉजिटिव है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया को बाहर से ज्यादा डॉलर्स मिले हैं एज कंपेयर टू इंडिया से जो डॉलर्स गए हैं. So this means that the world has given us these many extra dollars. And then what you do is you add these two accounts. एक आपका कैपिटल अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, and then you add your current account balance to it. इन दोनों को आप ऐड करोगे एंड इनके साथ में इसको -10 ले लेते हैं. चलो 39.5 30.5 आ जाएगा ना. हाँ, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. सो यू हैव -9.5 9.6, you have plus 40.1 which is essentially 30.5. now correctly. Then apart from that what you do is you add another thing which is errors and omission. कोई चीज रह जाती है तो हम errors and omission add कर देते हैं which is 0.7. so you get 31 point. ये आपका overall balance आ गया. This is essentially money that we have received from the rest of the world as compared to जो हमने मनी दिया. तो ये नेट हमारा जो बैलेंस है वो इंक्रीज, इस केस में इंक्रीज हुआ है. हमारी कंट्री में नेट ऑन नेट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में $31.2 बिलियन एक्स्ट्रा आए हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. सो ऑल यू डू इज ऐड करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस एंड एरर्स एंड ओमिशन to get to overall balance. Now once you get to overall balance, what you need to see is that the term is balance of payment. अगर आपने पहले कभी अकाउंट्स पढ़ी है तो अकाउंट्स के अंदर हम पढ़ते हैं ना कि एसेट्स और लायबिलिटीज मैच करनी चाहिए. तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि आपका अल्टीमेटली योर बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज टू बी जीरो. इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी पॉजिटिव. बट अगर आपकी कंट्री में इस क्वार्टर में $31 बिलियन एक्स्ट्रा आ गए हैं तो इसको जीरो कैसे बनाओगे? इस अमाउंट को आपको BoP से हटाना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट से हटाना पड़ेगा. और वो कैसे हटाओगे? ये जो पैसा है, ये जो जितने $1 बिलियन हैं, ये RBI को चले जाएंगे, RBI के रिजर्व्स में ऐड हो जाएंगे. और इस तरीके से रिजर्व्स में ऐड होते होते आज की डेट में RBI का ओवरऑल रिजर्व्स बैलेंसेस देखोगे तो वो +$600 बिलियन है. India has the fourth or the third highest
reserves in the world. Again, this is a question that we are expecting in this year's prelims. So don't be surprised अगर इस साल के पेपर के अंदर ये question आ जाता है. So again ऐसे questions आते हैं, usually pointers आ जाते हैं, and then there are 4-5 points, and then one of the points is this, and you need to choose कि कौन कौन से correct है. So again this all of this economic ये जो आप ये पढ़ रहे हो, economic survey पढ़ रहे हो, those of you will be preparing for civil services, these are all documents that we go through every year for your prelims as well as your mains. Now once this you know that हमारे पास ये positive आ गया, तो आप इसको हटाओगे यहाँ से. And how do you remove this? You transfer this to foreign exchange reserves. तो यहाँ पर -$31.2 billion का एक एंट्री दिखाओगे, और उस माइनस का मतलब क्या हुआ? इस माइनस का मतलब है कि इंक्रीज हुआ है आरबीआई के रिजर्व्स, क्योंकि आरबीआई के अंदर अब $31 बिलियन एक्स्ट्रा गए हैं फ्रॉम बीओपी. और अगर ये आइटम पॉजिटिव में है, यहाँ पर किसी ईयर में पॉजिटिव दिख नहीं रही, बट अगर ये आइटम पॉजिटिव में है, दैट मीन्स कि मतलब यहाँ पर सपोज ये -32 बिलियन होता, तो दैट मीन्स आप वर्ल्ड को ओ करते हो $32 बिलियन. दैट एसेंशियली मीन्स कि ये जो पैसा है ये आरबीआई से आएगा और फिर बीओपी को जीरो बनाएगा. सो दैट इज, अगर ये पॉजिटिव में फिगर आ रही है तो दैट मीन्स डिक्रीज इन फॉरेन. सो दिस इज हाउ your foreign reserves change and how your BOP works. So this is the numerical for BOP. You should be very thorough with, and you should practice this particular numerical at least twice so that you get a fair idea of how to appear in. Any questions on BOP, guys? Why are we supposed to remove this extra? If it's safe to remove. Because the term is balance. Balance का मतलब क्या होता है? Balance का मतलब होता है कि आप किसी को कुछ ओ नहीं करते हो, जीरो होना चाहिए ये अकाउंट. बैलेंस का तभी तो है कि अभी तो आपकी वर्ल्ड में, आपकी कंट्री के अंदर you have this extra dollars coming up, but that extra dollar cannot be there. That's why it's called balance of payment. So another question. Find change in reserves. This is change in reserves. This is exactly change in reserves. ये जो है, ये change in reserves जो आ गया, ये 31 plus $31.2 billion का change in reserve आया. Guys, don't get confused with this minus term. ठीक है, अगर ये माइनस है तो आपके फॉरेन रिजर्व्स में ऐड हो रहा है, और अगर ये प्लस है तो आपके फॉरेन रिजर्व से निकल रहा है ना. सो दिस इज अबाउट योर बीओपी. आई जस्ट वांट टू थिंक बिकॉज अ लॉट ऑफ वाचिंग these videos. Here, India was the fourth largest forex reserves holder after China, Japan, Switzerland. This is a very important line for this year's prelims. And as I told you, हमारा ये $633 बिलियन था 31 जनवरी 2021 को, but because of the high pressures on and because of the Russian war, हमारे यहाँ से foreign reserves का काफ़ी कम हुए हैं, and this has now dropped to around $600 billion.